राम राम भाई सारिया ने आज हमारा 75 हार्ड चैलेंज में है हमारे साथ आदित्य। आदित्य से कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे, कैसे आदित्य आंसर देते हैं हम जल्दी से देख लेते हैं। सो आदित्य, आर यू रेडी? Yes, sir. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। My name is Aditya. I am a student, and basically I come from Muzaffarnagar, but now I am living in Saharanpur for my future studies. ओके, दैट्स ग्रेट। व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? Basically, I want to become a businessman, but first I have to uh, complete my graduation. So next in upcoming year, I have to take admission in graduation. ओके, दैट्स ग्रेट। We want to know about your suppose that your improvement. You are here when you are came here the first time, and right now, what is your difference and your improvement in your life and your personality also? Tell me your experience. When I came here, I am not such a good li- such a good speaker, and also I don't have clear my basic concept. So when I came here, I completed my basic concept, and now I have to I don't have any confidence level. Now I am very confident, and also when first time I came to in front of camera, I am very shy, but now I am very confident. Okay, Aditya, maximum people and maximum student actually have the confidence problem. They have knowledge, but they can't speak any single words front of the camera, front of the peoples. What would you like to say about this particular problem? Yeah, this is a main problem. People and students have knowledge, but they don't have confidence. They have to build their confidence because confidence is much needed. They have to practice in front of cameras and people's also mirror, so they build their confidence level. ओके, दैट्स ग्रेट। सो थैंक यू आदित्य। अगर आदित्य का सेशन आपको अच्छा लगा है, मैक्सिमम पीपल एक्चुअली मेकिंग ए मिस्टेक। यू आर ऑल्सो मेकिंग मिस्टेक एंड वी आर इन सेशन। आदित्य also making mistake like confident and confidence, right? So but if you want to speak English and you have the strong desire to speak English, so this is very useful session for you, क्योंकि इसमें आपको सीखने को मिलता है कि कैसे आप बोल पाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फैंसी इंग्लिश या फिर आप स्लैंग पे चले जाते हैं तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। और ये बहुत इजी मेथड रहता है कि आप हिंदी टू इंग्लिश सीख सकते हैं और इंग्लिश टू इंग्लिश विद वेरी सिंपल वर्ड के साथ आप इंग्लिश अपनी सीख सकते हैं। तो अगर ये चैलेंज आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और पिछले चैलेंज जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैलेंज में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन।